Yeah, my hobbies are sports and studies, and I'll play basketball in sports. Okay, wow. So you like playing sports, correct? Yes. Do you like playing any mobile games, any computer games? Yeah, sometimes. Sometimes? Okay. And what made you to join these whitehead classes? For like outside jobs and something. Okay, good, good. So, see, most importantly, because coding is important nowadays. So, whenever you will be, sitting in the placements, and then they will be asking you whether you know the programming languages or not, computer languages or not. So, at that time, it will be playing a crucial role for you. Okay, if I ask you, what do you mean by coding? Because I know you are here to learn to write codes, you are here to learn to write programs. So if I ask you, what do you mean by coding, what would you suggest? We give instructions to computer what to do. Okay, yeah, correct. So can I say the process of giving instructions using some programming languages is called coding? Yeah. So coding helps us to design various games, apps, websites, and various things. Okay, and everything will be covered in this platform. All right. So Gunjan, I would also like to, add a reason that why coding is important, why it is so important nowadays is because, see, like nowadays, I can say humans are working with the human beings, correct? But can I say in coming 10 to 15 years down the line, we might actually be working with the robots and computers? Yeah. So don't you think so that for working with the robots and computers, we need to get some knowledge so that we can work with these computers and other stuffs? Yes, ma'am. So that knowledge we can get only by after studying some programming languages because these languages are understandable by the computer. Yes, ma'am. Correct. So giving instructions to a robot is different from giving instructions to a human. Is that true? Yes, ma'am. How can you say that? We need to give step-by-step instructions to computer to do, and human beings can understand. Okay. So yeah, correct. So for robots and computers and other stuff, we need to be very step by step instructions in giving. And by for a human, you can be because humans have their own brains. They can just analyze whatever Yes. you give the instructions and they can react accordingly. So it's very crucial because like in which language do you speak to your parents? English and some. English, Hindi, both. Yeah. So will the computer understand any instructions given in Hindi? No. Similarly, there are various languages which are specified for the humans to speak, like English, Hindi, Tamil, Telugu, Gujarati, Marathi, Kannada. So every languages are meant for the humans to understand. Computers will not understand these languages, correct? So there are various programming languages for the computers to understand. So have you heard of any examples of any programming language? Can you tell me some? Yeah, JavaScript and something. Yeah, great. JavaScript, Python, C, C++, various languages are there. So we'll be learning how to design some games using JavaScript programming language in today's class onwards. So at the beginning of the classes, we'll be starting some games and then we'll be moving on to some, complex games and then mobile app creations. Okay, we at the end Okay. of some few number of classes, you'll be becoming a certified game developer as well as a certified app developer that we'll be learning in our course. Just click on Yes, that ma'am. student activity 1. Yes, ma'am. Okay, so what all characters you can see there? Computer, ball, and child. Correct, robot, boy, and the child and the ball. Yes, ma'am. Correct. So that's one of the game that we'll be learning in our course. Can you control the boy Yes, ma'am. With the help of mouse. with the help? No. The boy. The child. With Can you control mouse. the child? With the help of mouse. Yes. That's what I was asking. Now come back to the Whitehead Junior. We'll open the second game. Second, T-Rex run a game. Have you played this game before? Yes, ma'am. Where have you played this game before?
When the internet connection is not there. Correct. So we can play this game when we don't have any access to the internet. So Google designed this game for the browser when we don't have any internet connection. Okay. So that is another game, Gunjan, that you'll be learning how to design. Okay, ma'am. Okay. Come back to the Whitehead Junior. Open the third game. Have you played this game before? Yes, ma'am. Okay. So now you will be learning to design this game. And the best part is, Gunjan, that you will be learning the exact tools which these Angry Birds developers used actually. The actual Okay. real developers they use, that same thing you'll be learning. Okay. Come back to the Yes, Whitehead ma'am. Junior. Okay, open the fourth game. So have you played this game before or any pattern of this game? Yes, ma'am. Okay, you played, they're very good. So, what all things you can see in the game? So, it's called Pong game, and it's one of the oldest video game designed by the computer programmers, and it has been very, very popular at its time. Okay, Yes, ma'am. okay. Gundan, can you come at a place which is a little bit quieter because the dog is barking, it's creating problem. Ma'am, we have closed the door. Okay, okay. So, okay, so this is called Pong game, and it is one of the oldest video game designed by the computer programmers, and it used to be very, very popular at its time. So Okay, tell ma'am. me, what all objects you can see in the game? Two paddles and one bowl. Okay, correct. Two paddles and one ball. So these two paddles are in the shape of, Rectangle. what is the shape of the paddle? Rectangle. Very good. What is the shape of the ball? Square. Correct. So these are the three objects that we'll be learning how to add, and this is the game that we are going to design in today's class. Okay, we'll Okay, start ma'am. with this game today. And what all things you can see in this game, Gunjan? Screen back. Then come to the line number 7. It's written function draw. So function draw ka meaning what? What do you understand by function draw? We will draw something inside it. Correct. So function draw means something we can draw inside the Canvas. function draw. So every function has this two opening and closing bracket, and every function starts with the curly bracket and ends with the curly bracket. Okay. Okay, ma'am. Now in line number 9, it's written rect. So what do you mean by rect? Any idea? Rectangle. Very good. So rect is a command in JavaScript which will help us to draw the rectangle. Okay. Okay, Then ma'am. there is one more thing on the right hand side. There is a one setting cycle. I can go for changing the themes of this particular P5 editor. See, correct? Okay, ma'am. It's Yes, nice, ma'am. no? Yes, ma'am. Correct. So let us read these four numbers. So rect you told me stands for rectangle. Very good, perfect. So what are these four numbers like? What do you think it would be? Width, height, and something. We Okay, show yeah, where the with position of the rectangle. okay. So I believe, like Gunjan, is this your first trial class? Yes, ma'am. Have you taken any other trial class before also? No, ma'am. Okay, wow, then. Okay, so very good, I would say. So there are some numbers are for the position and some numbers are for the width and the height. Very good. So what I'll do is I'll just delete the first number. Let us experiment one by one. What these numbers Yes, ma'am. and then we write the favorite color. What's your favorite color? Black. Okay, go for it. Black, close inverted comma, close the bracket is already closed. Okay, just try to move it now. Now it's fine. It's working. Yes, ma'am. Okay, so Gunjanji, just 5 minutes into coding, and you were able to draw all the three objects. Okay, it's a really good start, I would say, and you were very good with the numbers. Very, very good. I've never seen such. I've never taken such a trial class. So very good. Thank So you, ma'am. yeah. So like, do you want to learn further? Do you want to learn how to move the ball? Yes, ma'am. Do you want to learn how to move the computer paddle, the left paddle? Yeah, ma'am.
Yes, ma'am. classes. Once you get yourself enrolled with the white hat, we'll be taking up everything. Okay. As for now, Okay, ma'am. tell me, how was the class, Gunjan? Nice, ma'am. Okay. Did you enjoyed it? Yes, ma'am. Okay. How are you feeling now after learning to write codes? Nice. All right. So now I really had a lovely time teaching you. So you will get some rewards also. So I could see you were great in the class. So your concentration is very good. I would get 10 marks for that. And you Thank didn't you. give up. You were very, very good with the numbers. So 10 more marks for that and for persistence too. So Thank congratulations, you, ma'am. Gunjan. You have scored 3 hats in this first class. Thank you, ma'am. Welcome. All right. Now, after this, uh, okay. So I would say you did a really good job. Okay. And you were Thank you, ma'am. really, really good. So, like your exams are going on? No, they will be soon starting. Okay. So, like from when they are starting? 1 October. 1st October. So, you can, you know, that you can take these classes because it's just 45. Okay, just stop sharing your screen as for now. Okay, so you can Yes, take ma'am. these classes because it's just 45 minutes of classes, and you can have 2 class in a week or 1 class in a week, depends on your schedule. Whenever you get time, you can just schedule your own classes depending upon your days or times Yes, whenever ma'am. you get free. Okay, Yes, ma'am. okay. So now, do you want to see the apps which are created by the students from White Hat course? Yes, ma'am. You can see. Okay, just share your screen. Yes, ma'am. Okay, on the right hand side, scroll down your screen. Scroll down your screen. It's activity number 9, Book Santa app. So, what does Santa do, Gunjan? He gave gifts to the children. Correct. So, Book Santa is an app which basically is designed by the students from our course. So, it's an app. We will be learning to design these apps, and then you can view the apps which are designed by the students from our course. Can you just click on that? The below Book Santa is written White Hat Education Technology. No, 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 at the center. Below Book Santa is written White Hat. On the top only it's written Yes, ma'am. White Hat Education Technology. Click on that White Hat Education Technology. Yes, ma'am. Just scroll it down. These are all the apps designed by the students from our course, Gunjan. So Yes, apps, ma'am. which help us to test our eye power, app design to convert the normal language into sign language, app design to, report bullying. Yes, ma'am. Correct. So, do you also want your app to be displayed over here? Yes, ma'am. All right. Come back to the White Hat Junior. Ma'am, may I ask So, you a question? yeah, ask. That how I'll be able to learn AI and ML? Okay, so that thing you'll be learning in the module 3. So, there are total 144 classes. And without There are maths, total 144 classes. without math, how we Sorry, will learn? please say that. Without maths, Without how we maths, you will don't learn? have maths? No, You but we don't have need at mathematics? 11th class maths. We should need, no? No, no, no. It's not like that. You'll be learning in module 3. So we have total 144 classes. So every total 144 is divided into 3 modules. So every module has got 48 classes. Okay. Okay. So after first module, so in the first module you'll be learning about the game development and the app development. In the second module, we'll be learning Ma'am, about the React Native.
हाँ, यस। मैम मशीन लर्निंग कैसे सिखाऊँ? मैं तो अभी 9th क्लास में, तो आगे मैथ्स के लिए आगे 11 12th मैथ्स। नहीं नहीं, हम सिखा देंगे। जब आप उस चीज को करोगे तो ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि आपको 11th और 12th की मैथ्स आनी चाहिए। सो विदाउट दैट कैसे मशीन लर्निंग होता क्या है वैसे? आप वो पता है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नो मैम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है? नहीं मैम, नहीं पता अभी, आप बताना। यू टेल मैम। हाँ, तो एलेक्सा। क्या मैम? यू नो एलेक्सा? यस मैम। सो व्हाट इज एलेक्सा? मैम आपने कोई प्रोग्राम बनाया है मशीन लर्निंग में कभी अभी तक? एप्स और मशीन लर्निंग तो अलग होता है ना, तो फिर ऐप से मशीन लर्निंग कैसे सीखेंगे? नहीं, ऐप से मशीन लर्निंग नहीं सीखेंगे। मैं पूछ रही हूँ मॉड्यूल 3 के लिए जाने के लिए आपको मॉड्यूल 1 आता है पूरा? एप्स बनाना आता है पूरा? नो मैम। We can't jump up with like on the module 3 without completing module 1. Okay, so it's a process of 144 classes. नो, You are asking something. आई नीड इंट्रोडक्शन। तो मतलब अगर हम लेंगे वो क्लास कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए इंट्रोडक्शन तो चाहिए ना, उसमें क्या होएगा क्या नहीं होएगा। हाँ ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी ना, ऐसे पूछो। तो देखो मॉड्यूल 3 में यू विल बी लर्निंग अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड देन हाउ टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन पास्ट डेटा. So like nowadays we can see now like when it's going to be raining and at what place it's going to be hitting tsunami or earthquake or flood, anything, but it's just sitting at the home. So how we can do this? Okay, how we can even predict in it like so much years earlier when the asteroids is going to collide with the planet. How यस we can do that? Okay, for this we require this artificial intelligence and machine learnings, correct? So we'll be doing this in the third module. All right. मैम स्पेस So टेक्नोलॉजी for the क्या? third module, if you want, मैम स्पेस that's what I'm saying. टेक्नोलॉजी Na, क्या? you just understand in this way. In this way, you understand like so many years before only we can easily predict when it's gonna be, the any collision of the asteroids. Nowadays we have the news, correct? Like when the asteroid is going to hit the मैम planet, at what position, at what time, मैम everything, the entire geographical. मैम आपने कभी बनाया, मतलब कभी ऐसे एस्टिमेट किए, प्रिडिक्शन की है आपने कि कब आएगा कुछ नहीं, आपने कभी खुद नहीं, मैंने प्रिडिक्शन नहीं किया है, प्रिडिक्शन कोई नहीं किया ऐप, है. आपने Yeah, कभी प्रिडिक्शन everything, वाला everything. सॉफ्टवेयर The बनाया? apps which you can see in the book center app screenshots, everything is taught by the teachers, and the school students make by their own intelligence. Okay, after learning few classes, they make these apps on their own self. स्पेस टेक कोडिंग क्या होता है? Okay, स्पेस the idea is theirs, and then we get the app to be published on the मैम, Play Store and the App Store. Yeah, एक्सक्यूज मी मैम, saying something. स्पेस टेक टेक वो कोडिंग क्या होता Yeah. है? स्पेस टेक कोडिंग। Yeah, I'm telling na, in the module 3, you will be getting to learn about these things. Okay, everything cannot be told in the तो trial class. Just get होता क्या है yourself वो? enrolled with the white hat. Huh? होता क्या है? अभी क्या होता क्या है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या होता है? I am giving you the example, no? Using machine learnings and artificial intelligence, you will be able to predict how to make the prediction for collision of asteroids with the planets. मैम Okay, आपने for कभी any बनाया other है? of your doubts, मैम my academic counselor will be getting in touch with you. He will मैम be आपने solving कभी all of your प्रिडिक्शन के queries. लिए सॉफ्टवेयर बनाया है? हाँ, मैंने बनाया है. So for कौन any सा? of your doubts, Kunjan, please get in contact with the academic counselors. Okay? कौन सा बनाया है Are मैम? you interested to join the further modules? यस मैम, आई एम इंटरेस्टेड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। नो, आपने कभी बनाया है? कौन सा नाम, सॉफ्टवेयर का नाम? आपको पता है सारे सॉफ्टवेयर जो जो होते हैं? आपको studio.code के बारे में पता है? कौन सा मैम? studio.code के बारे में पता है? हाँ मैम।
आपको ये पता है कि हम फेसबुक और स्नैपचैट और ट्विटर सारे जो या कंपनीज हैं, ये कैसे प्रेडिक्ट करती हैं, इतने एडिक्टिव कैसे बनाती हैं अपने ऐप्स को? पता है मैम। कैसे बनाती हैं? गेमिफिकेशन से करते हैं ना। तो आपको बहुत नॉलेज है। यस मैम। कहाँ सीखा आपने ये सब? कोर्सेरा कौन सा पे कोर्स कोर्स किया किया था? था। कोर्सेरा पे गेमिफिकेशन का ना। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड ट्रायल क्लास में यूनिवर्सिटी बेटा का। ट्रायल ही मिलेगा। अभी आपको अगर आगे कुछ सीखना है तो उसके लिए एनरोल करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन प्रोवाइड द वीडियोस इन्फॉर्मेशन ना। ओके। तो मैम ये और जावास्क्रिप्ट कोई और जावा डाउट? में फ़र्क। मैम जावास्क्रिप्ट और जावा में फ़र्क क्या होता है? मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बताइए। जावास्क्रिप्ट और जावा में डिफरेंस क्या होता है? आप एक काम करिए, मुझे पहले समझ आप में नहीं मॉड्यूल आता। ज्वाइन करिए। You just join the module. These both are the languages. Okay, so just join the module first, then you'll be getting to know everything. मैम दो Okay? लैंग्वेजेस की क्यों ज़रूरत है? एक से तो हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो दो क्यों? Okay, so for this we'll be covering this in the next class. Okay, I'll teach you about this Y2, Y1, why JavaScript थोड़ा सा only. तो बताओ मैम, अभी टाइम है। डाउट। No, I need to cover the various things. No, let me cover the other things also. मैम वो रहने दो, आप मुझे मेरा डाउट बता दो ना। Okay, Gunjan, so is this your first trial class? यस मैम। I don't think so. क्यों मैम? I'm telling you. Is सवाल this your पूछ रहे हो first trial इसलिए? class? यस मैम। सवाल पूछ रहे हो इसलिए? Okay. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो? यस मैम। 1-to-1 में कर सकते हैं ना। 1.5 लाख की फीस है तो इसके लिए पूछना पड़ेगा। ओके, सो गुंजन जावा आप और एक काम जावास्क्रिप्ट करिए। में डिफरेंस आपको बताना मैम। आपको अगर जैसे कोई और भी डाउट है, हमारे जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं वो आपकी ज़्यादा अच्छे से क्वेरी सॉल्व करेंगे। ठीक है? मैम एकेडमिक काउंसलर तो सेल्समैन है ना, फिर उसमें क्या अच्छे से नहीं बता होगा उन्हें। फिर आप टीचर हो तो आपको तो पता ही होगा ना जावा और नहीं तो जावास्क्रिप्ट में आपको डिफरेंस क्या होता है, तो मुझे जानना है आपको ना उन मैम। आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। आप बाकी सारा पहले कर लीजिए, फिर मॉड्यूल जब आप एनरोल करेंगे विल बी टेलिंग यू दैट। ओके, आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट द आप थोड़ा सा तो लैंग्वेजेस, बताओ मैम, द जावा डिफरेंस। और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क क्या होता है? ओके, जस्ट होल्ड ऑन टू द लाइन। ओके, टेल मी। जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या क्या? होता है? जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस। Okay, so these are the programming languages. So further, any assistance you'll be getting to know in the coming classes. All right? Is that did you understand the trial class, Gunjan? नो मैम, अभी आप बता ही नहीं रहे हो तो समझ में कैसे आएगा? यू आर नॉट क्लियरिंग आपको माय डाउट्स। जावास्क्रिप्ट के से लेकर के आज समझ में आया सब कुछ? कुछ नहीं आया मैम, आपने अच्छे से डिफरेंस तो बताएंगे। इंटरनेट मैंने पे पहले जावास्क्रिप्ट भी के बारे में बताया, आपको वो समझ में आया? बहुत। ये तो मैम इंटरनेट पे फ्री में पहले ही पढ़ा हुआ है, मतलब कुछ आप डिफरेंस ठीक बताओ है, ना ठीक वन है। ऑन वन का। तो आप एक काम करिए, आपको एकेडमिक काउंसलर कॉल करेंगे। आपको उस करिकुलम से रिलेटेड जो भी डाउट है, वो सेल्स पर्सन नहीं होते हैं, आपको नहीं वो आता सेल्स मैम? पर्सन अलग होते हैं। और आपको अगर कोई भी और डाउट है आपको हम नहीं क्या आता मैम, पढ़ाएंगे सच क्या। बताओ। आपको हाँ नहीं मुझे आ रहा आता आता है, मैम? लेकिन मैं फर्स्ट ट्रायल क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी। आप इतनी बात क्यों कर रहे हो? आप मॉड्यूल 1 ऐसे के लिए एनरोल करिए, तब पढ़ाऊंगी ना मैं। ऐसे नहीं होता ना मैम, सब बताना पड़ेगा। अभी तो आता तो आपका बता देते ना। आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए।
आप बताओ मैम। हेलो हेलो या यस मैम। सर, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू वेरी क्लियरली. So sir, is he, like, are you Gunjan's father? आई एम हर एल्डर ब्रदर. Okay, so I have taken the trial class for her. नो, ट्रायल क्लास तो आपने दे दिया. अगर उसका कोई So सवाल है तो आप वो बता ही नहीं रहे, it's तो like वन I ऑन वन am का supposed फायदा to क्या tell हुआ? the. हाँ, So I am telling ना कि जावास्क्रिप्ट और जावा में जो भी है वो आपको उन क्लास में आप एनरोल करिए, हम आपको बताएंगे. दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. जावास्क्रिप्ट को हम यूज करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट के लिए. और जावा को सर आपकी आवाज कट रही है. नहीं, आवाज तो क्लियर आ रही है, मुझको आपकी क्लियर आ रही है. जावा अगर है तो जावा स्क्रिप्ट की क्यों जरूरत है? मतलब हम कोडिंग सर नहीं आती हमको जावास्क्रिप्ट तो. से हमें अगर गेम बनाना है तो हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे, और अगर हमें जावा है तो जावा आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है. ठीक है, तो अगर आपको अगर गेम बनाना है तो we'll use JavaScript, we'll क्यों? use various other programming languages like say Python. नहीं ऐसा. So for any of your other doubts, so just my academic counselor नहीं, will be एकेडमिक calling you. काउंसलर्स Okay, आपने उनका he'll be नाम solving एकेडमिक all काउंसलर of your रखा है. queries related to the curriculum. जो भी मैम आपको डाउट है curriculum में क्या. मैम जो आपके एकेडमिक काउंसलर्स है वैसे वो सेल्समैन है, उनको कुछ नहीं पता है. उनसे मैंने बात करके देख लिया तो वो कोई किसी सवाल का जवाब देते नहीं है. तो दैट्स व्हाई आई एम तो आस्किंग यू. सर उस चीज के लिए फिर आपको एकेडमिक काउंसलर ही हेल्प कर सकते हैं, हम टीचर्स हेल्प नहीं कर सकते. वी टीचर्स आर मेंट टू टीच दोज थिंग्स एकेडमिक जो क्वेश्चंस हमें तो फिर बताया जाता है. नहीं, एकेडमिक क्वेश्चंस तो फिर टीचर्स ही बताएंगे ना. नहीं सर, एकेडमिक क्वेश्चंस करिकुलम से सारा रिलेटेड टीचर्स नहीं बताएंगे, टीचर्स बस पढ़ाएंगे. ये तो बहुत अजीब कनंड्रम हो गया कि आधा आप बताओगे आधा वो बताएंगे. ये तो वो सर कंफ्यूजन हो पहले जाएगा. बताएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करिए, नो वरीज, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड. जो भी डाउट्स हैं हम उसको जब मॉड्यूल नहीं 1 मैम, में वो पढ़ेगी. एश्योरेंस तो होगा ना. अगर पहले एश्योर करोगे तो ही हम पैसे दे पाएंगे ना. क्योंकि इंटरनेट पे आजकल कोडिंग का सब जगह चलता है कि कोडिंग करने से अच्छा होता है करियर, इसलिए हम सिखाना चाहते हैं. लेकिन इंटरनेट पे जो हमने क्वेश्चन सर्च किए अब हमको तो समझ नहीं आया, इसलिए वन ऑन वन हमने सिखाने की कोशिश की कि आप जो डाउट आएगा किसी भी मोमेंट पे उसको आप बता दोगे. लेकिन आप तो बड़े फिक्स्ड पैटर्न पे चल रहे हो कि एक्टिविटी 1 2 3 4 होगी, उसी के हिसाब से चलेगा. अगर इतने फिक्स्ड पैटर्न पे चलना था फिर तो यूट्यूब या फिर किताब से पढ़ लेगा कोई. वन ऑन वन का तो यही फायदा ना, जिस मोमेंट पे डाउट आया क्वेश्चन और फिर जवाब मिल जाएगा. नहीं सही बात है. तो क्वेश्चन आपको जवाब तब मिलेगा ना जब आप थोड़ा एनरोल भी करिए. सब कुछ ट्रायल क्लास में बता दूंगी ट्रायल सर, तो क्लास फिर में एक मैं किस सवाल लिए का बैठी जवाब हूँ. भी नहीं दोगे आप. सर एक बात बताइए, अगर मैं सब कुछ ट्रायल क्लास में बता दूंगी तो सर मैं तो रोटी कहाँ से खाऊंगी फिर. नहीं, रोटी तो आपको मिल जाएगी, भगवान नहीं भरोसे कहाँ है. से मिलेगी सर, आप ही बताइए. अगर मैं सारा ज्ञान ट्रायल क्लास में दे दूं सर, आप आईआईटी में नहीं पढ़ते हैं नहीं तो मैम, सर जो आप पढ़ा रहे हो ये 1.5 लाख मैं का कोर्स पेड है. क्लास में 1.5 क्या लाख. पढ़ाऊंगी सर. मैम आपने कभी स्कूटी या बाइक खरीदा है? तो उससे क्या फर्क पड़ता है मैं नहीं, मैं स्कूटी बता चला रहा हूँ, पाती हूँ कि स्कूटी बाइक का चला जो पाती कॉस्ट हूँ. होता है ना उससे करीबन 2 या 3 गुना ज्यादा का आपका कोर्स है. स्कूटी खरीदने से पहले आदमी 3 या 4 दिन सोचता है, चेक करके आता है. और आप कह रहे हो कि हम सर पूरा कोर्स दे आपको दें और आप पूरे आपको पूछे बिना ये सवाल. सब जो भी डाउट है आप एकेडमिक काउंसलर से करिए सर, आप टीचर्स से क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में. मैम प्रॉब्लम है बच्चा बार बार एकेडमिक काउंसलर को कॉल नहीं लगाएगा कि मुझको ये प्रॉब्लम है. जो वीडियो पे आएगा हम उसी से सवाल पूछेंगे. कल हाँ आप नहीं ठीक बोलोगे है. कि सीईओ से जाके पूरी चिट्ठी लिख लो. क्यों? हम अगर वन ऑन वन टीचर से है तो फिर टीचर जवाब देते हैं. दैट्स इट. अब हाँ तो ऐसा थोड़ा होगा जवाब कि तो ट्रायल क्लास में जो बात जो जितना पढ़ाने को बोला जाएगा मैम उतना ही तो आप कह रहे हो कि पढ़ाऊंगी. आपके पास एक स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट के परे आपको कुछ आइडिया नहीं है. दैट्स इट. तो अगर सर आपको लगता है तो फिर आप एनरोल मत करिए. नहीं, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि एनरोल कर लेंगे तो आप सब बता दोगे. चलो मैं एनरोल कर हाँ दूंगा. तो आई गारंटी यू आई विल एनरोल. आप डिफरेंस समझा दिए जावा और जावास्क्रिप्ट में अच्छे से. ठीक है. सो दिस जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होती है हम उसको गेम बनाने के काम करते हैं, और जो जावा लैंग्वेज होती है वो एक हाई प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज है, हाँ, और वो हम C++ में काम करते हैं उसमें. हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है मैम? सर क्या मतलब होता है इसका. आप बताइए ना.
सर मुझे तो नहीं पता है ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब होता है जावा, उसी से यूज करते हैं, तो अब मैं उसके अलावा बस क्या फिर बताऊं? आप बताइए ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? सर क्या मुझे नहीं छत पता, पे चढ़ के कोडिंग मुझे करते नहीं हैं? पता सर। सर आपको यही सुनना है ना कि मुझे पता है कि नहीं पता? सर मुझे हाँ नहीं पता। एग्जैक्टली, मुझे यही सुनना है। एग्जैक्ट, टीचर से अगर पैसे दूंगा तो मैं यही चेक करूंगा ना कि टीचर को पता है कि नहीं पता है। और क्या सही चीज चेक बात, कर सही सकता हूँ बात। मैम मैं? आप क्या ठीक है, तो इस सर मुझे सिचुएशन में क्या चेक सर करूंगा कि ठीक है, व्हाइट तो हेड मुझे जूनियर नहीं का कितना पता। फंडिंग इज है, इज व्हाइट इज हेड दिस जूनियर को कौन सेटिस्फाइंग टू ऐड यू करता सर? है, ये थोड़ी ना मैं चेक करूंगा। मैं ये तो यही चेक करूंगा कि टीचर को कितना आता है। आप बता सर दीजिए एक हाई बात लेवल बताइए, ये प्रोग्रामिंग क्या आपकी होता है? इंजीनियरिंग की पहली ट्रायल क्लास है? इसकी हाँ पहली ट्रायल क्लास है, हाँ। सर ऐसा लग नहीं रहा, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। नहीं मान लो दूसरी है फिर, तो वो मुझे मान लो पता दस। चल गया ना कि वो पहली है कि दूसरी है। नहीं वो आपको पता चल गया और हमको भी पता चल गया कि आपकी भी पहली क्लास है। हाँ। हाँ। अच्छा, तो मतलब मेरी गुंजन के साथ पहली क्लास है, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपकी कोडिंग में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तो सर हमारे जो व्हाइट हैट में है उसमें हम लोगों को जो मैम ट्रेनिंग दी आपका जाती है कोडिंग में उस क्या हिसाब से एक्सपीरियंस हम है? पढ़ाते हैं। आपका कोडिंग क्या हमने एक्सपीरियंस है? करिकुलम नहीं डिसाइड किया सर। आपका गिटहब करिकुलम पे डिसाइड अकाउंट है? करने आप वाले गिटहब पे अलग आपका लोग अकाउंट होते देंगे? हैं। लीड कोड पे क्या आपने कभी सर? कोड किया है? गिटहब पे आपका अकाउंट है? आप नहीं। अपना लीड कोड पे, नहीं। गीक फॉर गीक पे आपने कभी कुछ चेक किया हो? नहीं। गीक फॉर गीक किस चीज के लिए साइट है मैम, बताएंगे आप? नहीं पता। तो फिर आपको कोडिंग का कोई आइडिया नहीं है मैम? तो सर फिर नहीं है फिर आइडिया। नहीं तो फिर आप पैसे क्यों मांग रहे थे अभी? कि कह रहे थे पैसे नहीं, दे तो फिर बताएंगे। मैंने तो नहीं मांगे। आपने बोले, मैं तो अभी कह आपने रही थी बोला कि आपके आपकी पास रोटी का सवाल है। सर एक काम करिए सर, हाँ। ये बहुत अलग ही लेवल पे जा रहा है, आप नहीं नहीं, एकेडमिक ये उस काउंसलर लेवल से पे जा करिए। रहा है जिस सर लेवल आप पे जाना टीचर से चाहिए। फालतू में आप बात इस तरीके से कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप कह रहे हो कि कोई सवाल पूछे ही नहीं, आप बस नहीं पैसे ही बिल्कुल, छपते आप जाएंगे। सवाल पूछिए सर, लेकिन पूछ रहे आप हो तो बता बहुत रहा हूँ, सारे हाई लेवल सवाल पूछ रहे प्रोग्रामिंग हैं, क्या तो होता है ये मैम? सारे आप एकेडमिक काउंसलर से भी पूछ सकते हैं। मैम एकेडमिक काउंसलर्स आपके सेल्समैन, उनको सेल्समैन बोलिए, उनको कुछ नहीं आता है। कल उन्हें एकेडमिक सब काउंसलर ने, पता है सर, मैम उनको मैम उनको कल पूरा आपके डिटेल एकेडमिक है। काउंसलर ने मुझको मुंह पे बोला है फोन पे कि भाई पहले पैसे दो फिर बताएंगे, उसके पहले नहीं बताएंगे। वही बात आप बोल रहे हो। तो सर वो गुस्सा आप मेरे पे निकाल रहे हैं, आप गुस्सा एक थोड़ी टीचर निकाल को रहा हूँ ब्लेम कर रहे हैं हर मैम, चीज मैं के कहाँ लिए। गुस्सा हूँ, मैं तो कितना प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे। तो प्यार से तो नहीं कर रहे सर, ट्रायल क्लास पूरा मूड ही खराब कर दिया। मैं मूड ट्रायल तो क्लास में अगर, पढ़ाती कुछ हूँ और हो कुछ सॉरी रहा है सर। नहीं सॉरी सर सॉरी, आपका स्कूटी मूड और खराब पता हो नहीं गया। क्या क्या नहीं बात कर मैम रहे हैं मैम सर, आप एक बात, क्वेश्चन कर रहे हैं टीचर पे। क्वेश्चन करे और किससे क्वेश्चन करे? तो पेरेंट्स सर से करे, एकेडमिक काउंसलर बस की भी ड्राइवर गलती से है। करे, अगर आप ट्रेन एकेडमिक ड्राइवर से काउंसलर की करे, जगह पे पायलट होते से हैं, एक क्वेश्चन बात थोड़ा ना करेंगे। बताइए। कल मैं पुलिसमैन से थोड़ा ना क्वेश्चन करूंगा, टीचर से ही करूंगा ना। आपका मूड खराब हो गया सॉरी, लेकिन 1.5 लाख दे के जब पेरेंट्स का मूड खराब होगा और लाइफ भी खराब होगा, बच्चों का साइकोलॉजिकल अब्यूज होगा, तब कुछ नहीं। सर आप आपको, मेरे से क्यों ये चीज कह रहे हैं? आप क्योंकि एकेडमिक आप टीचर हो काउंसलर से। मैम, आप टीचर हो नहीं तो और आप कौन है एकेडमिक टीचर? काउंसलर से कहिएगा ना यही एकेडमिक बात। काउंसलर पढ़ाएगा कि आप पढ़ाओगे? नहीं मैं पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने अगर गलत, उन्होंने ये कहा कि अगर आप पहले एनरोल करिए उसके बाद पढ़ाई जाएगी, तो फिर उन्होंने गलत कहा क्या? आप उनकी जगह होते आप भी यही तो करते। फिर ट्रायल क्लास का क्या मतलब था? क्या? तो ट्रायल क्लास का क्या मतलब है? ट्रायल क्लास का मतलब ये होता है, इसमें केवल ये बताया जाता है कि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, तो ये आने एग्जैक्टली वाली तभी मैं, क्लासेस में ही पता चलेगा अच्छा वो सर। क्या क्या बाद में पता चलेगा, लेकिन किस तरीके से, वही मैं किस तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ। मशीन लर्निंग आप कैसे पढ़ा दोगे 10वीं क्लास के बच्चे को, या उससे छोटे? आप तो 6 साल के बच्चे को भी कह रहे हो। सर 11 मैंने 12 का मैथ चाहिए इसीलिए होता कहा है। था कि आप एकेडमिक काउंसलर से ही बात करिए सर आप। मैम आपका कोडिंग का एक्सपीरियंस कैसे ही बताएंगे आप? आपकी ग्रेजुएशन किस चीज में है? सर मैंने बीटेक की है। किस किस सब्जेक्ट में? इसी में। मैंने भी उसी में की है, लेकिन आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब भी नहीं पता है। ठीक है 8085 सर, और नहीं पता सर, 8086 मैं में ट्रायल डिफरेंस क्या क्लास में होगा? इतना कितना बता दूं, मैं सारा पूरा। सर एक काम करती हूँ, मैं ना नहीं अभी नहीं, बैठती हूँ, आपके सामने तो बीटेक बैठा 144 है ना, क्लासेस बीटेक का टू पूरा बीटेक, पढ़ा देती हूँ एक तो सर। बीटेक टू बीटेक ठीक सर, यही सही कॉन्वर्सेशन। रहेगा, मुझे भी यही लग रहा है सर। 8085 और 8086 में डिफरेंस बता दीजिए आप। क्या? 8085 और 8086 में डिफरेंस बता दीजिए आप। ये आप माइक्रो कंट्रोलर्स की बात कर रहे हैं ना? आपको आइडिया तो होगा ही ना क्या है, तो आप बता दीजिए डिफरेंस क्या हाँ होता है इन तो दोनों बस में। फिर सर आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं आप सर। आप हाँ ट्रायल तो क्लास किसका नहीं ले लूंगा? रहे। तो आपके आप सर सीईओ मेरा के, ये इंटरव्यू ले रहे हैं कि मैंने लाइफ में अब तक क्या एग्जैक्टली पढ़ाई मैं करी। आपका ही इंटरव्यू ले रहा हूँ, और पेरेंट्स को इस सिचुएशन में टीचर का ही इंटरव्यू लेना चाहिए। तो क्योंकि सर मैंने आपको, बताया ना वो चीज मैम आपको बिकॉज सर। वी आर गिविंग यू जॉब टू टीच माई किड, तो जॉब देने से पहले इंटरव्यू देना पड़ता है कि नहीं? तो सर क्या पढ़ाएंगे वो बता तो दिया है, अब आपको हर चीज जाननी है, उसके लिए कहाँ से मैं बताऊं कुछ?
मैं ट्रायल क्लास में कैसे बता सकती हूँ? मैं सर आई एम सो सॉरी, मैं ट्रायल क्लास में नहीं बता सकती ये सब. ठीक है फर्स्ट मैम, प्लीज गेट योरसेल्फ दैट्स एनरोल्ड, इट, ओके मैम, प्लीज सर. जो हमने जानना था, हमने सुनना था, हमने सुन लिया, दैट्स इट, नाइस टॉकिंग टू Okay. यू, ओके Thank थैंक you यू, so much. It was थैंक nice यू। talking to you too. ओके Thank you. थैंक यू वेरी Bye, मच, sir. थैंक Take care. यू, टेक केयर.